आज है 6 मार्च 2024। एक स्टॉक मैं आपको लास्ट 6 मंथ से लगातार रिकमेंड कर रही हूँ, हर महीने रिकमेंड कर रही हूँ। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। स्क्रीन पे देखिए 18 सितंबर को मैंने 5200 पे इसका बाय दिया था। आज के दिन, आज 6 तारीख है मार्च की, इस स्टॉक ने 8650 रुपए को टच किया है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये 10,000 को क्रॉस कर जाएगा बहुत जल्दी ही। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी क्या गेम चेंजिंग सिचुएशंस हुई है बजाज ऑटो के स्टॉक के साथ कि इसने इतना एग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया है। बहुत सारे रीजंस हैं और आपके लिए वो रीजंस जानना जरूरी है और इससे आपका कन्विक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो शेयर करती हूँ बजाज ऑटोज गेम चेंजिंग मूव। सबसे पहले इन्होंने सीएनजी बाइक्स लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। बजाज ऑटो लेड बाय मिस्टर राजीव बजाज इज सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक इन द नेक्स्ट क्वार्टर, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सीएनजी मोटर बाइक। उसके बाद इको फ्रेंडली इम्पैक्ट, इस बाइक का इको फ्रेंडली इम्पैक्ट क्या होगा मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। द सीएनजी बाइक प्रोटोटाइप हैज शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, रिड्यूसिंग CO2 emission by 50%, carbon monoxide by 75%, and methane hydrocarbon emission by nearly 90%. This could potentially double the mileage and half the fuel consumption for customer. Very, very important factor. अगर कस्टमर को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है किसी भी मूव से और उनका फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस होता है, द बाइक विल बी अ सुपर बाइक। फिर इलेक्ट्रिक चेतक, बजाज ऑटो इज विटनेसिंग अ स्ट्रॉन्ग मंथली ग्रोथ ऑफ 3 to 5% in its electric variant of Chetak brand. A new Chetak is planned for launch next quarter, which hopes to double production to 20,000 Chetaks every month. So that's also going to be a very, very promising plus move. ज्यादा कंजम्पशन मीन्स ज्यादा प्रोडक्शन मीन्स ज्यादा प्रॉफिट। और थर्ड इनकी लग्जरी बाइक्स हैं जो ट्रायम्फ बाइक्स हैं। कंपनी बोलती है कि इनका एम है, द कंपनी एम्स टू डिलीवर 10,000 ट्रायम्फ मोटरसाइकिल अ मंथ until the festive season, expanding its capacity to produce 30,000 units a quarter. However, all Triumph offerings will remain limited to 400cc capacity. So ये कंपनी प्लान कर रही है 10,000 बाइक्स पर मंथ प्रोड्यूस करने का, 30,000 पर क्वार्टर का, बट 400cc के अंडर ही कैपेसिटी रहेगी। उसके बाद मिस्टर राजीव बजाज बोल्ड क्लेम इन अ स्पेशल चैट विद CNBC TV18 Rajiv Bajaj. The managing director of Bajaj Auto Limited confidently asserted that the fair value of Bajaj stock is 12,000. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कंपनी के मालिक बोल रहे हैं, राइट? वो जानते हैं कि उनकी कंपनी राइट नाउ इज अंडरवैल्यूड. And then there is a buyback buzz. The company has a buyback of shares worth 4,000 crore at 10,000 per share. Imagine, right now current price is 8,650. And when is it going to buy back 10,000 per share? You know what the date is? The date is between, that means at 43% premium. The opening on 6th March and closing on March 13th. आप क्या सोचते हैं, अगर आप आज 8,650 का खरीदते हैं और कल 10,000 का बेच देते हैं तो आपको सीधा सीधा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, राइट? So this is why price is just moving like anything. Then market performance. Bajaj Auto shares have seen 123% increase in the last 12 months, making it the second best performing stock in Nifty 50 index last year with an 88% return. As of March 5th, the company's share closed at 8,351, and today when I'm making this video, the stock has closed around 8,600, right? So this is how beautifully the stock has moved. The reason is very clear. There is a buyback at 10,000. आप 8,600 पे खरीदते हैं, 10,000 पे बेचते हैं, almost like 1,400 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको बिना कुछ करे. So that is, these are the game changing plans for Bajaj Auto. अगर आपके पास Bajaj Auto है, do not sell it. The fair value is 12,000 rupees. So stay invested as long as you can. अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के रखिए. बेकार स्टॉक्स जो ऑपरेटर ड्रिवन है, जो फंडामेंटल वीक है, उनको आप किसी भी समय एग्जिट कर सकते हैं. Stay tuned with such more important updates and keep learning and keep earning and keep making good money with right knowledge, right information and right timing. All the best, and like, share and subscribe
so that this channel grows and you make money and I make you understand basics of stock market. Bye bye. Take care. See you.